Good morning, children. Open your new Sparkle semester series, standard first, semester second book. I have completed the question answers exercise. Question answers, fill in the blanks. Now, page number 12, activity language development. Activity language development. Listen to the sound of EA and E-double-E. Read aloud. Read aloud. Read aloud. Okay. Now see here. EA. Team. Team. Feet. Feet. Eat, EA, which EA, feet. Then seam, EA का जहाँ पे उच्चार होता है. Beat, heart beat, BEAT, beat. Then peel, EAL, peel. Team, feet, seam, beat, peel. Then double E, neem, feet, seam, beetroot, beat, and this is peel, eel, which you have to say neem, EEMM, neem, that is neem. Feet, eat, feet. Seam, SEEM, seam. BEET, beetroot, beat, and peel, eel, ELL, जहाँ पे ई का प्रोनाउंस उच्चार होता है. नीम, EEM. Now, list the chores that are done. List the chores that are done in a house every day. One example has been done for you. Use the words from the brackets. Washing, chopping, greeting, crushing, grinding, cutting, and mixing. Example, washing pots and pans. Yes, here. Washing pots and pans. WASHING. POTS, pots, AND, and PANS, pans. Chopping any? Washing means you know, washing clothes, washing pots and pans. Washing, dhona. Then chopping any? Cut karna. Vegetables, chopping vegetables, right? CHOPPING, chopping vegetables. VEGETABLES, chopping. CHOPPING, chopping vegetables. Then granting, GRANTING, granting coconut. Granting, GRANTING, granting coconut. COCONUT. Crushing, CRUSHING, crushing bottles. crush करना ऐसा.
मुचड़ना, उसको ऐसे दुमड़ के फेंकना, जैसा हम पानी का बॉटल पानी पीकर उसको ऐसा क्रश करके फेंक देते हैं, बॉटल्स, BOTTLES। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग चिलीज, ग्राइंडिंग GRINDING, ग्राइंडिंग CHILLIES, चिलीज। कटिंग, CUTTING, कटिंग, CUTTING, कटिंग। फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। मिक्सिंग, MIXING, मिक्सिंग। बटर एंड, BUTTER, बटर, and eggs, EGGS, butter and eggs. With the help of the first example and use the words from the brackets. In the brackets they have given now washing, chopping, then grinding, crushing, grinding, cutting and mixing. With the help of these words we have to make some what we can do with these things. We have to give one example, that is you can say chopping vegetable, chopping हम कब करते हैं, chopping किसके लिए यूज़ करते हैं, chopping means for cutting। then washing, wash हम कैसे करते हैं, ये words जो दिया गया है, with the help of these words into the bracket we have to write what we are doing with these things। then mixing हम कैसे करते हैं, मिक्सिंग के बाद कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंड क्या करते हैं हम लोग, चिलीज करते हैं मिक्सर में डाल के, मिक्सिंग करते हैं, बटर एंड एग्स, मिक्स क्या करते हैं, उस तरह से तुम्हें लिखना है। हैव यू कंप्लीटेड दिस? विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन हियर, वॉशिंग, चॉपिंग, वी हैव टू राइट द अदर वर्ड, दैट विथ washing, what wash we can do, pots and pans, chopping what we do, vegetables, grinding coconut, crushing bottles, grinding माने कोकोनट को हम फोड़ के उसको ऐसा ऐसा निकालते हैं, that is called as grinding यानी grinding is different, grind करना, उसको निकाल के मिक्सर में डाल के उसको ग्राइंड करना, मैंने बारीक करना जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे गुड फिनिशिंग, ग्राइंडिंग इज चिली इज गुड फिनिशिंग, कटिंग फ्रूट्स, मिक्सिंग बटर एंड eggs, now we will come to the second one, page number 13, different methods of cooking are shown below, observe the pictures, select the correct word from the brackets and write it below the picture, first one, what is there, see here what they are doing, first you see the picture, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें फ्राइंग दिया है, रोस्टिंग दिया है, बेकिंग दिया है, स्टीमिंग दिया है, इनको हमें ये पिक्चर देखकर बताना है कि इसमें ये कौन सा वर्ड सूट होता है, विच वर्ड विल सूट देयर, वहाँ पे कौन सा वर्ड बैठता है। स्टीमिंग यानी क्या, स्टीमिंग करना, STEAMING, स्टीमिंग यानी माने जो हम भाप पे करते हैं, इडली करते हैं ना, और फिर उसको बोलते हैं ना, भगवान के लिए मोदक जो बनाते हैं, जो नीचे एक बर्तन रखा हुआ होता है, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के उसके अंदर और एक कंटेनर रहता है, इडली का तुमने पात्र देखा है ना, हाँ, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टीमिंग। उसमें ज़्यादा हम लोग ये नहीं करते, स्टीम यानी पानी में उबालकर उसको निकालते हैं, उसको पानी में उबालना है बस। फ्राइंग यानी FRYING, फ्राइंग, जिसको हम बहुत डीप फ्राइड करते हैं तेल में, बज्जी को हम फ्राई करते हैं ना,
that is called as frying. Baking, B-A-K-I-N-G, this is baking. This is oven. ये एक ओवन है, उसके अंदर हम डालते हैं तो वो बेकिंग हो जाता है, उसको बेकिंग कहते हैं. केक बेक करते हैं ना हम लोग, केक, बिस्किट, यस, दैट इज कॉल्ड एज बेकिंग, B-A-K-I-N-G. एंड दिस इज रोस्टिंग, R-O-A-S-T-I-N-G, जिसको हम आग में सेक सकते हैं. जिसको हम आग में सेकते हैं ना, उसको हम रोस्टिंग कहते हैं. बिना तेल लगाए हुए हम उसको रोस्ट कर लेते हैं. तवा भी इसके ऊपर रखकर हम लोग जो हमारा गरम मसाला रहता है ना, उसको हम रोस्टिंग कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज स्टीमिंग, फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग. स्पीकिंग स्किल. देखो, प्रिपेयर अ वेजिटेबल सैलड विद द हेल्प ऑफ योर मदर. दिस इज द होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव यू टू डू. प्रिपेयर अ वेजिटेबल सैलड विद द हेल्प ऑफ योर मदर. Then explain the procedure in your own words to your class in the next day. What you have to do is you have to prepare the salad. सैलेड तुम्हें बनाना है मम्मी का हेल्प लेकर, और नेक्स्ट डे उसको तुमने कैसे बनाया है तुम्हें एक्सप्लेन करना है. राइटिंग स्किल is this you have to speak in the class. Writing skill. Write any two types of work you do at home on a Sunday or on a holiday. हॉलीडे के दिन, संडे हो या किसी छुट्टी के दिन. राइट एनी टू टाइप्स ऑफ वर्क. एनी टू टाइप्स ऑफ वर्क, तुम्हें टू टाइप्स का वर्क जो तुम घर में करते हो, क्या करते हो तुम्हें लिखना है. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ एक्टिविटी, ग्रामर, कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. Capital letters and full stop. So, the capital letters and the full stop. Learn. Every sentence begins with the capital letter. Every letter, every sentence begins with the capital letter and ends with the full stop. All proper nouns begins with the capital letter. Example, Tarun and Tania are friends. Tarun and Tania are friends. A dog is running. A dog is running. Rewrite the sentences. Rewrite the sentences using capital letters and full stops. One example has been done for you. The girl is skipping with a rope. The girl is skipping with a rope. वो रस्सी का खेल खेल रही है. देखो, तुम देख सकते हो ना, वो रस्सी का खेल खेल रही है. मनोज इज रनिंग अ रेस. सेकेंड वन इज मनोज इज रनिंग अ रेस. इसको तुम्हें क्या करना है? राइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स. सो yes, one has been the example, one has been done for you. The girl, the capital letter तुम्हें अभी बताया है. The first letter should be written as a capital letter. First letter should be written as a capital letter. The girl is see here. The girl is skipping with a rope. So the first letter, capital letter should be there. The first letter, the girl is here. The girl is skipping with a rope. The girl is skipping with a rope. TH, the GIRL, girl. IS is skipping, SKIPPING, skipping with a rope. WITH with AROPE, rope, with a rope. The second one is Manoj is running a race. Now here see this Manoj and TH the is written a small letter.
See here, it's written the small letter, first letter we have to write with this capital letter. Here also Manoj is written in small letter. Can you see now? It's written M small letter. You have to write Manoj. Here, see here. I'll write and show you. M-A Manoj, M-A-N-O-J, M-A-N-O-J, Manoj. Manoj is running a race. I-S is running, R-U-N-N-I-N-G, running a race, R-A-C-E, race, full stop, because you have completed the sentence. R-A-C-E, race. Manoj is running a race. Have you completed? Manoj is running a race. Okay. The boy is eating sandwich. The, see here, the boy is eating sandwich, right here. The capital. The, T-H-E, the starting letter. The boy, B-O-Y, boy is, I-S is eating, E-A-T-I-N-G, eating sandwich, S-A-N-D-W-I-C-H, sandwich. Now C1 we have completed. Now come to the D. Nina, N-I-N-A, Nina, I-S is reading, R-A-D-I-N-G, reading a story, S-T-O-R-Y, story, book, B-O-O-K, book, story, book. E1 is he, only first you have to change here. Only you have to change here. He, capital letters here. He likes, L-I-K-E-S, likes cycling. C-Y-C-L-I-N-G, cycling. He likes cycling. She loves cooking. She, S-H-E, she loves, L-O-V-E-S, loves cooking, C-O-O-K-I-N-G, cooking. She loves cooking. See here, only यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लिखकर लास्ट को तुम्हें एंड करना है, full stop, that is full stop. Okay, in this way you have to write. Now challenge, rearrange the words and rewrite each sentence. Okay, see here, challenge, rearrange the words and rewrite each sentences. I love mother my, I love mother mine, it is rearrange the words and rewrite. Again we have to rewrite, again हमें उसे correct sentence में लिखना है. See here, I love mother my, how to write? See here, I love my mother. What you should write? I love mother my, no, I love my mother. I, L-O-V-E, love, M-Y, my, M-O-T-H-E-R, mother. Second, B1, my school I love going to. My school I love going to. See here, my school I love going to. What will you write here? I answer, I love going to my school. I love going to my school. I, L-O-V-E, love, G-O-I-N-G, going, T-O-2, M-Y, my, S-C-H-O-O-L, school. The C1 is
Meena, Tina and friends are. Meena, Tina and friends are. Meena and Tina are friends. Meena, M-E-E-N-A, Meena and Tina are friends. M-E-E-N-A, Meena, A-N-D and T-I-N-A, Tina, A-R-E-R, F-R-I-E-N-D-S, friends. Meena and Tina are friends. So now I have taught you means given question answers, fill in the blanks is over. Activity language development, from here I have given you, that is a surprise treat. Page number 12 to page number 14. Page number 12 to page number 12 to 14. You have to read and write whatever I have taught and given you now. Whatever I have taught and given you now, you have to write till page number challenge is there. Till challenge is there. Page number 12 to 14, you have to read and write for 2 times. Only for 2 times. But learn by heart. Try to write and learn by heart. Okay, children? We will meet in the next video. Thank you.